All right, I am starting now. Can you see it? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Previously, we had done constant pressure process. What is the name of that process? Other name? Isobaric. है ना? Isobaric process में क्या होता है? Pressure constant. ठीक है. तो based on that, I have given you this question. Find the ratio of change of internal energy and heat supplied at constant pressure. Or we can write this question like this also. What fraction of heat supplied at constant pressure changes its internal energy at constant at isobaric process? Means you have to find ratio of change of internal energy to the heat supplied. So change of internal energy is always given by NCV delta T or dt, whereas heat supplied will depend upon the type of the process. तो isobaric process में क्या आएगा? NCP. P stands for constant pressure into delta T. Already this part also we have seen. NN getting cancelled, delta T, delta C getting cancelled. So this is Cp by Cv by Cp. है ना? This is nothing but a 1 upon gamma. Gamma is what? Adiabatic index. It is a constant adiabatic index. इसकी वैल्यू कितनी होती है हम नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे, बट इट इज द रेशियो ऑफ Cp by Cv, है ना? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 upon Cp by Cv, which is nothing but a 1 by gamma. Cp by Cv is gamma only. Denominator में है. Can somebody tell the value of gamma? Will it be greater than 1 or less than 1? Can you tell me? Gamma की वैल्यू 1 से मोर होगी कि लेस होगी कि इक्वल होगी? It will be greater than 1 because Cp is greater than Cv. Cp में ज़्यादा हीट लगती है 1 मोल गैस को कांस्टेंट प्रेशर में 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने में more heat is needed. Already these points have been discussed, है ना? तो गामा की वैल्यू हमेशा more than 1 होगी. How much it will be depends upon the it is monoatomic gas है, diatomic gas है. We'll see in the next chapter हम लोग complete करेंगे इस point को. Yeah, end of this chapter, values of gamma will be seen. Gamma is the ratio of two specific heats, molar specific heats. This is important question. Now let's see any other point we can do. No. Next process is isothermal process. Third process is isothermal process. Isothermal process means, as the name suggests, iso means same, thermal means temperature. It is constant temperature process. Temperature remains constant. T is equal to constant. Or in other words, change of temperature will be 0. As temperature remains constant, no change of temperature. It will be 0. Temperature doesn't change in isothermal process. Okay? Temperature will remain constant. So no change. What can be the equation of isothermal process? This also we can write very easily. How can we write? Since PV is equal to nRT, ideal gas equation. Okay. So isothermal में temperature constant, R is already constant, and the number of moles, all three are constant. So equation will be PV is equal to constant. So this will be the equation. Numericals point of view से कैसे लिखते हैं? P1 V1 is equal to P2 V2. Numericals करने हैं, है ना? केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने? PV is equal to constant is called what? कौन सा लॉ होता है ये? Just anybody remembers? कौन सा लॉ है ये? There is some name is given to this law, है ना? PV is equal to constant.
In other words, if pressure goes up, if volume goes up, pressure comes down and vice versa. अगर आपने वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर बढ़ जाता है गैस का. What is this law? Called in chemistry and physics also. ठीक है, ये लॉ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. कौन सा? आइडियल गैस लॉ. नो, आइडियल गैस लॉ में तो तीनों आ गए ना. दिस इज but particularly when temperature becomes constant, PV will be constant. This is called Boyle's law. Pressure and volume are inversely proportional. तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे. फिलहाल this is isothermal processes. Equation is this. This is also for Boyle's law in kinetic theory of gases or thermodynamics also we can call it. So we'll see separately. Same thing will be done again under the Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac law, and all three put together will be called ideal gas equation. So we'll see in the next chapter. But continuing further, ये समझ में आ गया इतना? No problem. Now, equation इसके ग्राफ कैसा आएगा? ये कैसा इक्वेशन है? देखो, P inversely proportional to V. This is called hyperbolic function, rectangular hyperbolic. Volume goes up, pressure goes down. And volume अगर बढ़ेगा, pressure कम होगा. It will be curved line always like this. Don't draw it like this. This we know very well. This is called reciprocal function or rectangular hyperbola. This is always curved decreasing line. है ना? If volume goes up, pressure goes down, and vice versa. इसमें भी temperature. If temperature is less, curve will be inside. If temperature is more, it will be outside. That can be crossed. इसको हम outside क्यों होगा? इस equation से check कर सकते हैं. PV is equal to nRT से. We can just justify this. If temperature is further increases, so graph will be further going up. है ना? So these are called isotherms. इनको क्या बोलेंगे? ये curve को क्या बोलते हैं? Isotherms. ठीक है. तो PV diagram for isothermal process will be like this. ठीक है? ग्राफ भी समझ में आ गया? Now what is the change in internal energy in isothermal process? My question is change in what? Okay, note down. You can note down this much. These are the points we have seen. Okay, this can also be shown here. एक मिनट है ना? Yeah. So isothermal process. My question is this now. What is the change in internal energy in isothermal thermal process? Delta U निकालना है. Delta U in any process is given by NCV delta T. ठीक है. So what will be the answer? Since temperature doesn't change in isothermal process, so it will be zero. Internal energy depends upon change of temperature, which is not happening in isothermal process. So internal energy doesn't change. Gas की जितनी internal energy है initially, that will remain finally or in between. So internal energy doesn't change in this process because temperature doesn't rise or fall. ठीक है? Got the answer? समझ में आ गया? Are you there? Yes, sir. Okay. तो ये हो गया आपका. Now, another question based on this isothermal process can be, what is the heat supplied? चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, थोड़ा गैप बना लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर. Next question can be heat supplied बोलिए या बाद में करते हैं? Heat supplied को बाद में करते हैं. I will ask you that question after the work done is completed in the isothermal process. Do you remember work done कैसे निकालते हैं इसमें?
बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर वी डिड द वर्क डन. क्या था फार्मूला वर्क डन का? अरे ये स्पेसिफिक हीट भी है. ओके, चलो ये क्वेश्चन पहले बताइए, फिर वर्क डन करते हैं. फाइंड द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस. बोलिए क्या आंसर होगा? मोलर स्पेसिफिक हीट इन आइसोथर्मल प्रोसेस. सीवी निकालना है ना. सीवी का फार्मूला क्या होता है? हीट सप्लाइड पर यूनिट मोल पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, तो क्या आंसर होगा बोलिए? नहीं, मोलर स्पेसिफिक हीट का सिंबल सी लिखेंगे हम लोग, सीवी नहीं लिखेंगे. सीवी स्टैंड फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. तो यहाँ पे सिंबल हम सी लिखेंगे, है ना. हीट सप्लाइड पर यूनिट मोल पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर. तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट इन दिस प्रोसेस? सी सिंबल लिखेंगे. बोलिए, क्विक आंसर देते जाइए. एनीबॉडी? एनीबॉडी? नो. अभी ऊपर क्वेश्चन किया. यू कैन टेक द क्लू फ्रॉम दैट प्रीवियस क्वेश्चन. चेंज ऑफ टेम्परेचर इज नॉट हैपनिंग. डेल्टा टी इज जीरो, तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय जीरो is infinitive. So molar specific heat is infinite. Why? Because it is isothermal process. Temperature doesn't change. Logically, what is the molar specific heat or any specific heat to raise the temperature by 1 Kelvin? Temperature doesn't rise here. In other words, you give the infinite heat, then also you are not able to change the temperature. Right? So specific heat means heat required for 1 Kelvin change of temperature. Here temperature doesn't change. Therefore, answer theoretically answer comes infinitive. है ना. Mathematically हम justify कर सकते हैं ना. It is infinite because temperature doesn't change. Temperature change is zero. ठीक है? No problem. Let's see work done. How to find out the work? Okay. Anything? How to find the work done? बोलो अभी. Work done का derivation is asked in the examinations. CBSE, I mean, CBSE and state board, both places they ask you derive the work done for isothermal process. कैसे करेंगे? क्या फार्मूला होता है वर्क डन का? बोलिए. पहले आपको इंट्रोडक्शन वगैरह देना है. एनी द नंबर ऑफ मोल्स गैस एट टेम्परेचर टी, है ना. टी भी द टेम्परेचर है ना, जो कि कांस्टेंट रहेगा. एंड सो ऑन. इंट्रोडक्शन देंगे. V1 is the initial volume, V2 is the final volume. ये सब आपको I have told you before any derivation you have to write the terms used. Initial volume, V2 is the final volume, and so on. We know PV is equal to nRT, है ना. Therefore, T will be nRT by V. ठीक है. V being the intermediate volume, बीच में कोई वॉल्यूम होगा. ठीक है, यहां तक समझ में आया. तो वर्क डन का फार्मूला क्या है? हाउ टू गेट द वर्क डन? We have done it in the beginning of this chapter. Work done is equal to P dV, P into delta V और P into dV. इससे काम चल जाएगा, हो जाएगा इससे. बट प्रेशर इज वेरिएबल हियर. प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम. वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा, है ना. तो वेरिएशन के लिए
कैसे करते बोलो? हाउ डू वी डू फॉर वेरिएबल प्रेशर? नो रिस्पॉन्सेज आर कमिंग। वेरिएबल प्रेशर के लिए क्या करते हैं? आइदर यू डू द इंटीग्रेशन और यू डू द एरिया। एरिया ऐसे कर्व का एरिया निकालना बहुत मुश्किल काम है। हाउ टू गेट दीज एरिया? आइसोथर्मल प्रोसेस में ये एरिया कैसे निकालेंगे? दिस एरिया कैसे निकालेंगे? वेरी डिफिकल्ट। तो इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करो फिर। इंटीग्रेशन करने के लिए कहाँ से कहाँ तक? वॉल्यूम V1 टू V2, पी की वैल्यू ऊपर से पुट कर दीजिए, NRT बाई VdV V1 टू V2। इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा बोलो? NRT तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1 बाई VdV V1 टू V2। 1 बाई V का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो? 1 बाई X का इंटीग्रेशन क्या होता है? अरे देयर, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई X? इज वेरी पुअर शो, मेनी टाइम्स वी डन। कितना? log x यस, log x। तो x की जगह v है तो log v हो जाएगा। log v, yes sir. NRT ln नेचुरल log है ना, log v और लिमिट V1 टू V2। तो when we put the limit, when we apply the limit, तो log V2 by log V1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा। ठीक है, प्रेशर के टर्म्स में भी इसको हम, ओके दिस इज ओवर, ये डेरिवेशन आपका हो गया खत्म। यू डोंट हैव टू डू फर्दर, यहाँ पे फिनिश हो गया ना। इफ बट इन टर्म्स ऑफ द न्यूमेरिकल सॉल्विंग, ठीक है, यहाँ पे तो समझ में आ गया आपको। इंटीग्रेशन दिस कैन बी, आई मीन दिस डेरिवेशन कैन बी आस्क्ड इन 3 मार्क्स। ऑलराइट, you can finish it here, but numerical's point of view, let me tell you one more point. numerical point of view से क्या करेंगे? log 10 बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। यहाँ पर अगर हमें नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है, लेट मी राइट हियर, डू यू रिमेम्बर हाउ डू वी डू इट? नेचुरल लॉग एक्स है कोई, ln मीन्स नेचुरल लॉग एक्स। तो इसको हमें बेस कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है, जिसमें लॉग टेबल होती है। ये 2.303, just write 2.3 also. 2.3 is enough, but I am writing full value. log x base 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2.303, NRT तो एज इट इज रहेगा, NRT will remain as it is, log base 10 V2 by V1। न्यूमेरिकल्स के लिए ऐसे करना है। सपोज वॉल्यूम डबल हो गया, तो log 2 बेस 10 कितना होता है? 0.303। log 3 टेबल मिल जाएगी आपको, टेबल विल बी गिवन, log टेबल इज इन द टर्म्स ऑफ बेस 10, तो आपको वहां से देखना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। कभी कभी वो प्रेशर के टर्म में अगर हमें कन्वर्ट करना है इसको, तो V1 बाई V2 को, तो V2 बाई V1 विल बी P1 बाई P2। सिंस आइसोथर्मल में क्या होता है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ से हम V2 बाई V1 को P1 बाई P2 लिख सकते हैं, है ना। तो अगर प्रेशर का रेशो दिया है तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू टर्म्स ऑफ P1 एंड P2। ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, NRT ln P1 बाई P2, सॉरी P1 बाई P2, ऐसे लिख सकते हैं। सिंस P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 फॉर आवर isothermal process। ठीक है, तो इसको it is optional, just I'm doing, you can finish here itself। नीचे वाला किस लिए लिखा? फॉर न्यूमेरिकल्स है ना। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, बोलिए।
Now my question will be, how much is the, how to find out the heat supplied in isothermal process? Heat supplied कैसे निकालेंगे बोलो? After doing this, my next question is find out the heat supplied in isothermal process. अगर आपको बोला जाए temperature changes this much, temperature changes from, okay, temperature तो change होता ही नहीं है इसमें, फिर heat supplied कैसे निकाली जाएगी बोलो? How to get the heat supplied? No heat supplied, no heat is supplied. हीट इज सप्लाइड बताइए, इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट सप्लाई तो कर सकते हैं ना हम लोग. हाउ टू फाइंड दैट? ओके, ये डन, दिस इज डन. Yes, sir. ओके, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हीट सप्लाइड इन आइसोथर्मल प्रोसेस? कैसे करेंगे? हाउ टू गेट द हीट सप्लाइड? अगर न्यूमेरिकल आ गया तो हाउ टू डील विद दिस बोलो. ओके, इसको ऐसे रहने दो. हाँ, इट इज ओके, बोलिए. वी नो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना. अच्छा, डेल्टा यू इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज 0. अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था. नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, from FLT, heat supplied is equal to work done plus change of internal energy. वर्क डन प्लस चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी. तो हीट वर्क डन अभी हमने निकाला, कितना आया? nRT ln V2 by V1, दैट्स ऑल, प्लस 0. इंटरनल एनर्जी तो चेंज होती नहीं. तो whatever the work is, whatever the heat is supplied, that much work is done. So heat supplied is equal to nRT ln V2 by V1. ठीक है. So this is the answer. Whatever work we do, whatever heat we supply, that much work is done. तो आपको बोला जाए derive the relation for heat supply, तो आपको वर्क डन का ही करना है. वर्क डन करके इतना, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और ये जस्टिफाई करो कि internal energy doesn't change because the temperature doesn't change. So using the first law of thermodynamics, you can, depending upon the mass of the question. If it is of 3 marks, you have to derive this relation also. If it's a just short question, 1 mark, then you can directly write like this. Got it? Yes, sir. तो ये आपका एक और पॉइंट हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस का. तो यू कैन जस्ट नोट डाउन. Moving on to the one more question, then we'll see the another process. एक और क्वेश्चन देखते हैं कि स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस. अच्छा, ये बताओ, स्लोप इस आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? स्लोप पता है क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा होता है ना. टेन थीटा इज y by x. if it is not the straight line, कर्व लाइन है, तो dy by dx लिखते हैं हम. कर्व लाइन है ना. तो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंस, इस पॉइंट पे हमें निकालना है, तो ड्रॉ द टेंजेंशियल लाइन एंड सी द स्लोप. ये एंगल, इसका टेन थीटा लेना पड़ेगा. इफ यू वांट टू फाइंड आउट हियर, ड्रॉ द टेंजेंशियल लाइन, ये थीटा निकालो, टेन थीटा. तो वेरिएबल स्लोप है, कर्व लाइन का वेरिएबल स्लोप होता है. तो हम लोग dy by dx लिखते हैं. y एक्सिस पे क्या है? प्रेशर है, तो dp हो जाएगा. x एक्सिस पे क्या है? वॉल्यूम है, तो dv हो जाएगा. तो मतलब dp by dv निकालना है. तो दैट इज द क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप इन आइसोथर्मल प्रोसेस. तो dp by dv की वैल्यू निकालनी है. कैसे निकालेंगे?
Okay, this is useful for JEE and NEET. Competition point of view, say I'm telling you this extra point. So since PV is equal to nRT, ठीक है, इक्वेशन हो गई. तो दोनों वेरिएबल है ये, P and V. If one goes up, other goes down, both are variable. So product of two variables. So first function differentiation of second function, V का differentiation करना है, dV लिखना है. Second function into differentiation of first function, है ना. प्रोडक्ट टूल बोलते हैं ना इसको हम, x1 into x into x2 का जो हमने सीखा था. फर्स्ट फंक्शन into differentiation of second function and second function v into differentiation of first function. राइट साइड में क्या आएगा बोलो? Because all the three terms are constant. यहाँ पे tv constant है तो ये constant हो गया, तो constant का differentiation होता ही नहीं. No difference, difference is zero in any constant. ये हो गया. यहाँ से देखो क्या आएगा, यहाँ से dp by dv हमें क्या मिलेगा, माइनस p by v. इजी टू रिमेम्बर ऑल्सो, है ना. कैसे याद कर सकते हैं इसको, अगर इधर dp है तो यहाँ पे p आ रहा है और यहाँ पे dv है तो नीचे v आ रहा है. और सिंस एंगल इज मोर देन 90, किसी भी पॉइंट के लिए कर्व ऐसा है, इस तरह से आता है. एट एनी पॉइंट एंगल विद द एक्स एक्सिस इज मोर देन 90, तो नेगेटिव स्लोप बोलते हैं उसको. नेगेटिव स्लोप है ये, ठीक है. तो दिस कैन बी यूजफुल फॉर जेईई एंड नीट्स ओनली. Method you can just, if you don't understand, no problem, but this end result you can write. क्या आंसर है, माइनस p by u, p by v. सॉरी, बल्क मॉडुलस याद है किसी को? एनीबॉडी रिमेंबर्स बल्क मॉडुलस? क्या था बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला? हाइड्रोलिक स्ट्रेस dp अपॉन Volumetric strain. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम. यहाँ से बल्क मॉडुलस भी निकाल सकते. देखो dp by dv इंटू v ऊपर आ गया, माइनस dp by dv कितना निकाला हमने, माइनस p by v इंटू v, कि माइनस माइनस p आ जाता है, बल्क मॉडुलस. तो इफ यू वांट next question based on this, that one is here. What will be the bulk modulus in this? Yes, extra questions say which can be useful for your further examinations. देखो, तो बल्क मॉडुलस का मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ आपको, कितना है, p आएगा. बल्क मॉडुलस का आंसर p आता है इसमें. Revise the things from the previous chapter of elasticity and then you can get the value p आएगा. इसका मेथड भी मैंने बता दिया आपको. dp by dv की वैल्यू रखने के बाद माइनस और v कैंसिल हो जाता है, p बचेगा. तो these questions can be for competitive examination point of view. Okay, this process is over. Anything you want to ask here in this isothermal process? No problem. Last process, important process is adiabatic process. ठीक है, ये नोट हो गया. Yes, sir. Okay. So similar points will be there in the adiabatic process also. Let's do one by one. The last process is adiabatic process. Main processes में last process है main process. Adiabatic process.
Adiabatic process means, have you heard this name? Adiabatic index अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था. तो adiabatic walls भी लिखा था हमने. Adiabatic means adiabatic walls are what? Through which there is no heat transfer. है ना? तो that process in which heat transfer doesn't take place. Suppose कोई आपने ऐसे सिलेंडर लिया, उसके अंदर गैस है, उसकी वॉल्स आपने वॉल्स उसकी कैसी बनाई? नॉन कंडक्टिंग बना दी. सपोज आपने उसकी वॉल्स ऐसे नॉन कंडक्टिंग बना दी. नॉन कंडक्टिंग सरफेस बना दी. ना तो हीट अंदर जाएगी इसमें, ना तो हीट आ सकती इसमें, नो हीट, और ना बाहर जा सकती, नो हीट ट्रांसफर. लाइक थर्मस फ्लास्क. थर्मस फ्लास्क में अगर हम हॉट कॉफी भर दें, रख दें, तो इट रिमेन्स हॉट. अंडर आइडियल कंडीशन इट विल not lose any heat. And here also, if heat transfer is not there, can we get the work done? Yes, we can get the work done. यहाँ पे देखो पिस्टन लगा दो. यहाँ पे सपोज थोड़ी देर के लिए जूम करते हैं. इट इज द सिलेंडर एंड यहाँ पर पिस्टन है. ये वाला पिस्टन है. दिस कैन गो आउटवर्ड और इनवर्ड. अगर गैस इसको पुश करती है तो वर्क डन होगा विदाउट ट्रांसफर ऑफ द हीट. इसको ऑल द सर्फेसेस यू टेक द इंसुलेटेड सर्फेसेस, है ना. तो सच प्रोसेसेस आर कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस. देखो, in adiabatic process the system is insulated from the surrounding and heat absorbed or released is zero. Okay, let us write our own definition. Let's write that process in which there is no heat transfer. That process in which there is no heat transfer. Okay. Therefore, that is delta Q is zero. dq or delta Q is zero. Okay. No heat transfer takes place. Such process is called adiabatic process. Now, you may be thinking insulated surface. Yes, surfaces can be insulated or without insulated also. Surface जो होंगी, even if without insulated, मतलब there is no insulated surface, but is it possible to have such process? Answer is yes. Suppose any process is very very fast कोई process होला, sudden expansion, there is no time to take the heat from the surrounding. पिस्टन, यहाँ से पिस्टन आपने सडनली हटा दिया, एकदम से you have pulled it out. Sudden expansion will take, the gas will be, suppose you are keeping the gas at 10 atmosphere. Remove the piston suddenly, so sudden expansion, so all the heat will be taken, means बाहर से heat, surrounding से heat will not be taken. Piston को you pull it very fast, है ना. So heat will not be taken from surrounding, it will be taken from the gas itself, system itself. So system will supply the heat. So work done will be there at the cost of internal energy. Internal energy कम हो जाएगी. Even if I am telling you, even if it is insulated, fine, no problem. तो आप धीरे धीरे भी suddenly भी कर सकते हैं. But suppose insulation is not there, insulated walls are not there, suddenly you just expand it. जैसे टायर बस्ट होता, suddenly you see टायर bursting take place, तो वहाँ पे it becomes cool. तो इंटरनल एनर्जी कहाँ से आती है? वर्क डन इज दैट एक्सपेंशन कहाँ से होता है? इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है. एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द गैस इटसेल्फ, इट्स टेम्परेचर फॉल्स. तो व्हाट वी हैव सीन, either no heat transfer, walls are insulated, or sudden expansion, है ना. Case of
bursting of tires, or in case of refrigerator में sudden expansion होता है. Of course, वहाँ पे refrigerator के almost insulated walls are there, but inside there is sudden expansion. Because of sudden expansion, there is a we call it adiabatic process. And adiabatic process में अगर work होता है तो कहाँ से energy मिलती है? Internal energy. So let's justify that point. Let me justify that point. From first law of thermodynamics, delta Q is equal to work done plus delta U. तो heat transfer तो मिल नहीं, surrounding is not giving any heat, तो zero हो गई. Work done plus delta U. तो work done is equal to minus delta U. That is, work is done at the cost of internal energy, at the cost of internal energy of the gas or internal energy of the system. Internal energy of system. ठीक है, क्लियर ये पॉइंट भी. तो और मैंने क्या बताया आपको? सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस, एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों, एक्सपेंशन और कंप्रेशन is also adiabatic process. रेफ्रिजरेटर में सडन एक्सपेंशन होता है तो क्या होगा? वर्क होता है, गैस इज एक्सपेंडिंग, तो वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है. गैस की इंटरनल एनर्जी कम हो गई तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है. एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है? खर्च हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर विल ड्रॉप. देयरफॉर टेम्परेचर, यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर टेम्परेचर ड्रॉप्स at sudden expansion. That's what is happening inside the refrigerator. We'll see the demo also. अभी हम देखने वाले हैं ये प्रोसेस के बारे में. Practically we'll see. ठीक है, इसका हम वीडियो फुटेज देखते हैं. थर्मल सडन एक्सपेंशन and how the temperature drops. Why the temperature drops? Because internal energy decreases. Internal energy decrease means temperature falls. Getting or not? These points are clear. यहाँ तक equation and all we will be seeing. Let us see that demo of this process, adiabatic process. Examples I gave you: sudden bursting of the tire or tube, or inside the refrigerator, or we can see that fire extinguisher, the compressed gas is coming out very quickly and expanding, and that particular, there is that process is equivalent to adiabatic process, and cooling temperature drops very drastically. CO2 will freeze there. So let's see the this process. Then we'll see the equation and all other points. We'll come back. So let me stop that recording first.